हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल. टुडे ऑन अ colon and rectal health awareness series, we have Dr. Kunal Oswal with us. Dr. Kunal Oswal लाइफ केयर हॉस्पिटल पुणे में लैप्रोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जन है और पिछले 16 सालों से इन्होंने इस रूप में काम किया है. वह महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के एक मेंबर है. वेलकम टू मेडी सर्कल, डॉक्टर कुणाल ओसवाल. थैंक यू. सो हर्निया आजकल एक कॉमन बीमारियों में से एक है और भारत में लगभग 10 से 12% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इस बीमारी का शिकार बन गए. तो डॉक्टर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हर्निया एग्जैक्टली क्या है? हर्निया मीन्स आउट पाउचिंग ऑफ द इंटेस्टाइन या एब्डोमिनल कंटेंट्स. क्या रहता है, अपने एब्डोमेन को एक मसल लेयर रहता है. सो in between the muscle layer, if there is a rent and your abdominal pressures are increased, then the abdominal contents try to protrude from that rent, which is called as a hernia. जी डॉक्टर. तो हर्निया के कारण क्या होते हैं? Now, छोटे बच्चों में या commonly in adults, in males, उनको inguinal hernia रहते हैं. Inguinal hernia is because of a small rent in that area, which is because the testicles have been traveled from the abdomen into the scrotum, right? So in males that area is little weak, and anything which can increase the abdominal pressures, like say increase muscular activity, increase cough, smoking, then any liver disease जिसमें पेट में पानी भर जाता है वगैरह. So इन बीमारियों के कारण पेट का प्रेशर बढ़ जाता है, and to accommodate that extra pressure, the abdomen tries to come out from the areas where which areas are weak in the muscle layer. Say अगर इंग्वाइनल रीजन हो गया या प्रीवियस कुछ सर्जरी हुआ है या अम्बिलिकल रीजन रहता है, जो अम्बिलिकल में नाभि जिसको बोलते हैं, वो एरिया भी थोड़ा वीक रहता है. सो दे ट्राई टू स्ट्रेच इट एंड एट सम लेवल द मसल्स गेट torn apart and they form a defect. There is a rent, and through this rent then the hernia starts coming out, which is called as a hernia. The abdominal contents start coming out, which is called as a hernia. Okay doctor, so hernia के signs and symptoms क्या है? There is a abnormal lump on the abdomen, and it increases once you cough और once you strain for motion. ये उसका size increase हो जाता है, and if you lie down then the size decreases. So these are the signs of that this person has a hernia. ओके डॉक्टर, सो क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि हर्निया कितने टाइप के होते हैं? There are common sites where hernias occur. One is umbilical hernia, second is a inguinal hernia, and फिर कुछ पेशेंट्स जिसके सिजेरियन सेक्शंस हुए हैं या एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, वो उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं कि दैट इंसिजन इज स्ट्रेच्ड and then there is a rent in that incision. So this is called as a incisional hernia. And there are very rare hernias which are called as Spigelian's hernia, obturator hernia. So these are very rare, but commonest hernias are inguinal and umbilical hernia. जी डॉक्टर, सो बेसिकली हर्निया के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के हैं? Now in that rent, the intestinal contents, that means the intestine, go out and come inside depending on increasing in the pressure in the abdomen. Now if the person coughs very loudly, the pressure is suddenly increased and a good amount of intestine come out through that rent, and then they don't come back,
then they are caught in that rent. Yeah. So once they are caught in that rent, their blood supply is compromised. Blood supply is compromised, and this is called as a strangulated hernia. In that case, it is an emergency. Because if the surgery is not performed early, then that intestine loses its blood supply, and then it becomes gangrenous, and it might be fatal also. So this is the commonest complication with hernia, that suddenly the person has severe pain in that hernia site, and this is a signal that the intestines are getting strangulated. तो जिन पेशेंट्स को हर्निया है उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? See, there is no medical treatment for hernia. The treatment for hernia is only surgery. Right. Now the rent in that hernia site, the hernia rent is closed by sutures, and then it is reinforced by a mesh. Right. So this surgery is performed by open method or laparoscopic method. But the treatment for hernia is only surgery. Surgery is avoided only and only if the patient is really very high risk, very old, that giving him anesthesia is really a risk. In that case, we avoid telling surgery. In that case, we give them an abdominal belt or a truss, what is called as a truss. But surgery is the only answer and only treatment for hernia. जी डॉक्टर। सो मेडिसर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम अपने दर्शकों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें और वो भी कम से कम टाइम में। सो आज इसके लिए हम एक छोटा-सा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें से आप हाँ या ना या तो फिर 1 और 2 लाइन के सेंटेंसेस में भी आंसर कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरा पहला सवाल ये है डॉक्टर कि पुरुषों में हर्निया ज़्यादा होता है? यस। ओके। तो क्या हर्निया सिर्फ पेट में ही होता है? हर्निया चेस्ट में भी हो सकता है, या एंड एनी क्लोज कैविटी विच हील्स, इवन ब्रेन में भी हर्निया हो सकता है। ओके डॉक्टर। सो क्या हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक पेनफुल मेथड है? Laparoscopic surgery is less painful than open surgery, but it has its own indications in which you can do a laparoscopic surgery in some, you cannot do laparoscopic hernia surgery in all hernias. So in indicated cases, laparoscopy option is better than open surgery. Okay, doctor. Thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and insights with us at Medicircle. It has been a pleasure having you on the show. Thank you so much. Thank you.